coming batch, the June exam, or even the December examination, because it is a blessing that the students now are getting the application with 1 year panel. Initially it was 6 months, but the application has done 1 year with the study material hard copy, which is there, and the application will be sent to you by post. So you can see the complete classes of the entire syllabus, approximately 100 plus classes we will be getting in the entire topics of unit 1 to unit 10, then the hard copy, then 1 year validity, then you are already connected with me, and so many things. And yes, paper 1 of this UGC net panel is totally free. So we are not writing here, but you will be getting the paper 1 also. So it is a great blessing, students, that whatever panel you have, whatever plan A you have, you must go with the excellence. You must study good, the content has to be good, and yes, don't forget, it has to be very much experienced. And as I have been teaching past more than 2.5 decades, so I think that you will be benefiting a lot. So now students, let us start this session. And before I start, you can just download the Google Play Store, which is in front of you. The application is very simple on the iPhone also, iOS also, and Android, and you can see all the verticals there. Now, the topic is Shakespeare's England, and before, I think 1 month before, I have taken 2 sessions of Shakespeare's England, session 1 and session 2. But those students who are new here, they may even see those sessions, but it will not disturb your continuity, because every topic is different. But yes, it is Shakespeare's England. Shakespeare का England कैसा था? Fine. So good morning all of you. And the first thing which I am going to teach is the theatre. इसी में पहला टॉपिक रहेगा the theatre. Now students, इस theatre में क्या हुआ था कि English drama had to fight 2 battles. जो अंग्रेजी ड्रामा था, इंग्लिश का जो ड्रामा था, मतलब the drama written in the English period, they had to fight 2 battles before it was, emancipated for works of the highest order. And one battle was with classicism. एक battle किससे थी? One battle which was with classicism, and the other battle was with Puritanism. Very important topic, Puritanism. Again, I am repeating that English drama had to fight 2 battles before it was emancipated for works of highest order. One battle was with classicism, and the other battle was with Puritanism. Fine. Now, there was drama in England long before it developed in this age. There was drama in England long before it developed in this age. And which age? This age. And क्या था? There were mysteries, there were miracles, then even moralities and interludes. There were mystery plays, miracle plays, morality plays, and even interludes that were staged. ये सबको स्टेज किया जाता था. For what? For the profit. For the profit and even entertainment, delight of the people throughout the 14th and the 15th century. Delight, for the delight in the 14th and 15th centuries. And the new drama arose out of classical studies. एक नए प्रकार का ड्रामा निकल के आया from the classical studies, but it had also to free itself from what? From the classical restraints. A new drama arose of the classical studies, but yes, it had also to free itself from the classical restraints.
So what happened that after the introduction of plotters, Plautus, after the introduction of plotters, after the introduction of Terence, and the third is, yes, Seneca. After the introduction of Plautus, Terence and Seneca, where? In the universities. Their plays were read in the classrooms. उनके जो plays थे वो कहाँ पढ़े गए? In the classrooms. And they were also staged. They were also staged in the colleges, in the universities. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ staged. In the colleges and the universities. So students who are watching me here, they may put their presence here. Krishnanath Pandey, good afternoon. All of you students who are watching me here, they may put their presence in the classroom so that we may be able to interact. And it is going to be a great session for those students who wish to know that what is actually English literature and what to study, and what is actually the right content, the experience content, and what actually you have to write in your IAS, PCS and any verticals to understand what is English literature. And then after understanding, then you can actually understand that yes, OSN Academy would be the most fruitful destination for all the verticals of English to study from the application which can be downloaded. Rama Gangwar, good afternoon Rama. So again I am repeating, after the introduction of Plautus, Terence, Seneca, in the universities, their plays, इनके जो plays थे, they were read in the classrooms, and being read in the classrooms, they were also staged in the colleges, they were also staged in the universities. Fine. And one thing more, imitations naturally followed. Imitations naturally if you are students of UPSC, PCS, West Bengal PCS, Jammu and Kashmir PCS, or even the written examinations, or for UGC net, the concepts has to be very clear for the interviews and for writing in the answers, because if you are an UPSC student, then every question has to be blended with the history part. So this, what I am teaching, I am sure that nobody teaches in the entire country, and this is known as social history of England. Social history of England is so important. Believe me, imitations naturally followed. And in 1553, अगर हम 1553 की बात करें, निकोलस उदल, इन्होंने क्या लिखा? Can anybody tell me on the comment box? In 1553, a very popular name, Nicholas Udal, he wrote, Kunal Kumar, good afternoon. Rakesh, good afternoon. In 1553, Nicholas Udal ने क्या लिखा? जल्दी से बताइए, स्क्रीन पे जल्दी से बताइए मुझे. बताइए. बहुत देर कर रहे हैं आप. चलिए. Nicholas Udal wrote Ralph Royster Doyster, and this Ralph Royster Doyster is the first English comedy.
द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी किस फॉर्म में है ये? इन क्लासिकल फॉर्म, इन क्लासिकल फॉर्म। यूपीएससी ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्किंग 244 है, ऐसी सिचुएशन में यह सब्जेक्ट कैसा रहेगा? इफ दिस सब्जेक्ट वुड नॉट हैव बीन so glamorous, so why would students from Kashmir to Kanyakumari would have been studying Krishna at OSN Academy? There are innumerable students who are studying from the Delhi universities, and believe me, there are so many students who are engineers, computer engineers, mechanical engineers, who are from the BSc background, who are from the commerce background. They have chosen English literature after researching for at least 1 year. And then when they found OSN Academy, now they are studying so good that they are completing their courses for the different, this target years. So what happens that if you have to qualify IAS and if UPSC में आपका mains optional में English literature है, and you have love for literature, and if you have the skill of writing English, then it is the best subject because syllabus defined है. And yes, if you have OSN with you, then nothing to worry at all. Otherwise, there is no platform where you can get that level of experience and that level of content which is required for UPSC mains. So this is one of the best subjects for UPSC if you have, writing skills and you have the passion for literature. If you can compare with any other subject, maybe sociology, maybe political science, maybe history, maybe geography, maybe anthro, you will find, but yes, English literature is only tough for those students who don't have love for literature. This is a very fact about it. So in 1553, Nicholas Udall wrote, क्या लिखा मैंने आपको? Ralph Roister Doister, and it is the first English comedy in the classical form. And in 1562, and whatever I am teaching you here, it is all a very integral part for your UPSC also, to make the base of history of English literature. Otherwise, when you will answer the question, you cannot blend the history part into it, and then that's why students don't get marks, because nobody teaches you to that level, to that excellence level where things are blended together and then the examiner gives you good marks. In 1562, अभी मैंने आपको बताया 1533 के बारे में. अब 1562 में क्वीन एलिजाबेथ विटनेस द परफॉर्मेंस इन द इनर टेम्पल ऑफ गॉर्बडॉक. क्वीन एलिजाबेथ, शी विटनेस्ड इन द इनर टेम्पल. In 1562, Queen Elizabeth witnessed the performance where? In the inner temple. और ये उसका नाम है, थिएटर का नाम है, प्लेस का नाम है जहां पे परफॉर्मेंस होती थी. और किसका परफॉर्मेंस देखा? गॉर्बोडॉक का. गॉर्बोडक, जिसका सब टाइटल भी है फेरेक्स एंड पोरेक्स. इसका सब टाइटल भी है फेरेक्स एंड पोरेक्स. एंड यस, ये क्या है गॉर्बोडॉक स्टूडेंट्स? दिस इज द फर्स्ट क्लासिकल ट्रेजेडी. जैसे मैंने उसको बताया था, फर्स्ट क्लासिकल कॉमेडी. दिस इज द फर्स्ट classical tragedy. And who has written this? This is written by Norton and Sackville. यहां मैं लिख देता हूं, Norton and Sackville. This was written by two authors, Norton and Sackville. Devina, good afternoon. IAS aspirants who are watching me here, she is my student Devina Shrivastava. She has also taken UPSC में she has taken English literature as an optional, and she has joined the application and she is studying good.
and she is also very happy. Devina, if you are able to listen my voice, can you just write few words about your experience with the classes? As we have not spoken telephonically, so maybe the students may feel good to interact with you, that what was your experience when you joined OSN Academy with the optional English literature. So just you can write few words about your experience. Fine. So ये हो गया आपका. अब देखिए क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं. Yeah, this is the link. On the screen, this is the link of the application. Very simple. OSN Academy from the Play Store. Now, there have been many scholars also, students. And I will tell you the name of the scholars, like Harvey, Gascoigne, and Sir Philip Sidney. So these scholars, yes Devina, yes, you have to just write few words here also, only here on this message. What was your experience with joining the OSN classes and how you felt like? So these scholars, Harvey, Gascoigne, Sidney, they all actually, pleaded. इन्होंने plead किया किस चीज के लिए? They actually pleaded for किस चीज के लिए? For observance of the unities. Of the unities. Of the unities. And condemned the contemporary romantic plays. उनको condemn किया जो उस समय के समकालीन romantic plays थे. गुड आफ्टरनून महादेव. आपने नाम तो लिखा नहीं है, इसमें लिखा है महादेव की कृपा से. सो व्हाट्स योर नेम? फाइन. सो ये हो गया. अब हम इसकी बात करें फिलिप सिडनी की. सो फिलिप सिडनी in his work, which is a very popular work, क्या नाम है उसका? Apology for Poetry. Sidney, in his work Apology for Poetry, which was written in 1583, written W, P मतलब published, 1585. Sidney, in his Apology for Poetry, very important thing बता रहे हैं आपको, ध्यान सुनिएगा. Sidney, in his Apology for Poetry, which was written in 1583, published in 1585, condemned the Elizabethan plays. He, in his work, condemned the Elizabethan plays. Devina, I have joined OSN Academy in December, and since then I have been assisted quite brilliantly by the material provided by OSN Academy and personally by Sir. He is the perfect mentor for UPSC. Thank you, Devina. I am happy that you as my student, for a teacher, for a guru, for a professor, only this matters, that the students are too happy with the content, with the experience which I have, and they're happy that each of my student, whether they are for UPSC, whether they are for GIC, whether they are for TGT, PGT, MA English, anything, they are directly connected to me, which is technically not possible in the entire world or in the entire country. Why? Because I am a professor at heart. And as a government professor also, I have nurtured lakhs of students and made lakhs of careers in India. And it is only because of the love and affection and dedication that today
The entire country has been making their careers, and this is what I only need. Your happiness, your career orientation, you become something in life, and then you remember or you forget Dr. Agrawal. But I feel happy that certain candidate today, innumerable students in India, they are, shining like stars, getting the salary of more than 1 lakh rupees by qualifying NET and becoming assistant professors in the topmost universities and degree colleges in India by qualifying so many commissions. So ये खुशी की बात होती है टीचर के लिए. और टीचर को क्या चाहिए? If you are actually a dedicated person in this particular field. So thank you, Devina, and I hope that you will make me or my academy and the entire country or your city proud that you had taken English literature as your optional and you got OSN and you got it worth. Thank you, Devina, for all your words. God bless you. Now, coming back to the point, just 1 second. Bhavna Pandey, I want admission in PG with English literature. How would I crack entrance exam in government college? Bhavna Pandey, I don't know from which city you belong to, or you want to qualify which university entrance. But yes, if you want to qualify any top universities or any universities in India, just get in touch with me, or you can download the application OSN Academy from the Google Play Store. Get into that application, you will find MA English Entrance का vertical वहाँ पे है. This MA English Entrance vertical को आप join कर लीजिए, and even you can contact me, you can have a word with me, and then see your level of excellence by completing the classes and then going for the examination. So I would advise every student who is wishing for the topmost entrance examination, they should always study. क्यों होता क्या है कि जो आप सोच रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आता. आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रिपरेशन कर ली, बट व्हेन यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड सी द पेपर, you will find that, oh my God, I don't know even 10% of MA English entrance examination जो वहाँ पे दिया हुआ है. So this is the reason I always advise students. Fine, Bhavana. So see on the screen, my number is also given there. You can WhatsApp me and you can download the application and you can do the needful. So now I will again continue with the class, coming back to the point. And students who are ever watching me here, they may again concentrate. See, I'll say that the English dramatist, हमने यहाँ तक बात कर ली है. Now I'm going to rub this. हम लोग इंग्लिश ड्रामेटिस्ट की बात कर रहे थे. द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी हो गई रैल्फ रॉस्टर बाय निकोलस उदल, फिर गॉर्बडॉक हो गई. नाउ द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट वेर बेसिकली कंडेम्ड. उनको कंडेम किया गया या कंडेम किया जाता था. आई एम फ्रॉम चंदौली, वाराणसी. ओके, फाइन भावना. सो यू हैव गॉट ऑल द डिटेल्स. आफ्टर दिस सेशन you can be in touch with me. Don't waste your time. The English dramatists were condemned not only for the violation of the unities of time, place and action. English dramatists को क्यों condemn करते थे? Not only, केवल एक वजह से नहीं कि वो violate करते थे unity of time को, unity of place को, unity of action को, but also for मिंगलिंग ऑफ ट्रेजेडी इन कॉमेडी. इसलिए भी उनको बहुत ज्यादा कंडेम किया जाता था. दे वर कंडेम्ड ऑल्सो फॉर मिंगलिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इन द सेम प्ले. सो देखिए, 2 पॉइंट मैंने आपको बताया. पहला पॉइंट यह था कि दे वर वॉयलेटिंग कौन है, देवर वॉयलेट, मैं लिख देता हूं.
they were violating the unities of time and place and action, and पहला पॉइंट इसलिए कंडेम किया जाता था, दूसरा फॉर मिंगलिंग and comedy in the same play. Any questions? अब तक में कोई क्वेश्चंस आपको है? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सारी पिक्चर्स आपके दिमाग में, आपके आंख के सामने हमने बना दी है. एंड मार्लो एंड शेक्सपियर, मार्लो and Shakespeare. संतन कुमार, आई वॉन्ट टू क्रैक TGT एग्जाम एंड सर व्हाट आई शुड डू. संतन कुमार बेटा आपको बस डाउनलोड करना है एप्लीकेशन OSN Academy फ्रॉम द प्ले स्टोर, और वहां जाकर के TGT का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं. TGT बैच में पिछले बार भी 30, 35, 40 बच्चे क्वालिफाई करके निकल गए. दे हैव जॉइन द गवर्नमेंट कॉलेजेस and they are now preparing for the higher level examinations like NET and even PCS की तैयारी वही TGT के बच्चे कर रहे हैं इस समय उसी एप्लीकेशन से. So TGT PGT या ये जो LT के एग्जामिनेशंस है जस्ट आफ्टर द UP इलेक्शंस, thousands of posts are going to come, और इसमें विनर वही बच्चे रहेंगे जो तैयारी पहले से कर रहे होंगे. ये ध्यान रखिएगा. Okay, Santan. So numbers is also given there. You can go through it and you can even WhatsApp on the same number. So Marlow and Shakespeare की बात करें, so they did not care for the classical conventions and they produced great plays according to the English genius which they had inherited. जो भी उन्होंने जीनियस इंटेलेक्चुअल लेवल इनहेरिट किया था उसके हिसाब से उन्होंने प्लेस को प्रोड्यूस किया, एंड दे डिड नॉट केयर फॉर द क्लासिकल कन्वेंशंस. फाइन. सो सी संतन, द लिंक एंड द नंबर्स इज गिवन टू यू. एनी क्वेश्चंस यू मे पुट अप हियर ऑन द स्क्रीन. UPSC एस्पिरेंट्स अगर हमें देख पा रहे हैं, अगर उनके मन में कोई क्वेश्चंस हो, PCS कैंडिडेट्स अगर देख पा रहे हैं उनके मन में कोई क्वेश्चंस हो, या किसी भी वर्टिकल के स्टूडेंट्स हो इंग्लिश लिटरेचर के, सो दे मे पुट देयर क्वेरी ऑन द स्क्रीन. अब यहां तक हो गया. नाउ बहुत स्टेप वाइज हम लोग चल रहे हैं. दिस इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द वे फॉर कॉम्पीटिंग द हाइएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इन इंग्लिश लिटरेचर. अदरवाइज बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स. नाउ we are talking about English drama, we are talking about the theater. Now what happened that the English drama had to fight another battle. अभी तक तो वो लड़के आ ही रहा था. Now it had to fight another battle. जब से ड्रामा की शुरुआत हुई है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ever since the beginning of drama. हम ऐसे इसको लिख सकते हैं थोड़ा समझाने के लिए. एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ ड्रामा, कंसेप्ट समझिएगा. एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ ड्रामा इट वॉज कंडेम्ड बाई Puritans who found the stage to be the home of. इनको ये लगता था, क्यों जब से ड्रामा शुरू हुआ था तब से ये प्यूरिटन्स इसको क्यों कंडेम करते थे स्टूडेंट्स? बिकॉज these people found according to the Puritans, the stage is supposed to be
the home of paganism, the home of obscenity, and the home of profanity. इसमें पेगनिज्म है, इसमें ऑब्सेनिटी होती है, इसमें प्रोफेनिटी होती है, इसलिए प्यूरिटन्स यूज्ड टू कंडेम द स्टेज as they were of the opinion that it is basically the home of paganism, obscenity and profanity. And so they denounced the presence of women. इन्होंने क्या किया? Puritans ने क्या किया? They denounced the presence of women. They denounced the presence of women and prostitutes in the audience. Are you getting my point, students? थोड़ा सा बातचीत करते रहिए जिससे मुझे ये समझ में आए कि आप हमारे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं स्टेप वाइज. जस्ट बी इन टच विद मी थ्रू द मैसेज, थ्रू द स्क्रीन, सो दैट I also feel, yes, those students who are watching me for the first time, those who have come for the first time at OSN, just subscribe the channel and click the bell icon so that you may be in touch with us. And you can even comment on the comment box regarding any questions. Fine. So they denounce the presence of women and prostitutes in the audience. Why? Because इन लोगों के लिए, Puritans के लिए, to them, the stage was the school of Satan. ये समझते थे कि जो stage क्या है? Stage is a school of Satan. ये समझते थे. Puritans used to think that stage is a school of Satan, and the plays were the food of adultery, and the actors were the masters of vice and the teachers of wantonness. So हर चीज Puritans ड्रामा के लिए नेगेटिव समझते थे. And these Puritans, they saw in the comedies the demoralizing pictures, and they saw in the comedies the demoralizing pictures of what? Of vices, of the incongruities, of the rascality, of the vagabondness. And in the tragedies, they saw the stimulating examples of murder, of treachery, of rebellion. And that is why they were so much against the dramas. Comedy में उन्होंने immoralizing देखी, tragedy में उन्होंने murder, treachery, rebellion देखी. And the clergymen were dismayed to find, ये देख करके, that on Sundays the churches were empty. जो clergymen होते थे वो बहुत दुखी हुए, वो dismayed हो गए to find that on Sundays the churches are empty and the theaters are full. Just imagine. See the difference. So if I just remember, in 1574, the city authorities of London forbade the performance of plays except after censorship and even licensing. Any questions regarding the chapter which I am teaching you or regarding any of your
career guidance, you may ask. Any questions, students? Or I may continue? Now what happened? Next. Before 1576, theatrical performances took place. Theatrical performances took place. Where? On temporary platforms. और उसको बोलते हैं scaffolds. They were staged on temporary platforms or scaffolds, which used to be fixed in the courtyard of inns or at some prominent places in the villages or in the town. ये हम बात बता रहे हैं आपको before 1576 की. That these theatrical performances took place on the temporary platforms or scaffolds. These things used to be fixed in the courtyard of any hotel or inn or at any prominent places in a village or a town. But in 1576 जब आ गया, when this came, a very popular name, James Burbage. James Burbage, he built the first theatre in England. First theatre in England. And what was the name? उसका नाम ही रखा गया The Theatre. थिएटर बनाया लेकिन इसका नाम ही रखा द थिएटर. Any questions, students? Be a little interactive so that I may also know that you are asking the questions or you are actually understanding the session. That is a good communication. Communication should always be two ways. And it was simply called the theatre. Fine. And one thing more, to escape the jurisdiction of the London magistrates, उससे बचने के लिए, किस चीज से? जो उनका jurisdiction है, किसका? Of the London magistrates का. He built it outside the city proper. Where? In the suburb of, I am not able to remember that place, something like Shoreditch, something like that. वहां पे उसे suburb में बनाया है. And what happened that in 1599, 1599 जब आ गया तो रिचर्ड बर्बेज ने, जेम्स बर्बेज ने नहीं, रिचर्ड बर्बेज ने, उसका बेटा था, he demolished his father's theatre. Who? Richard Burbage. 1599 RB. रिचर्ड बर्बेज, ये वाला, इसको डिमोलिश कर दिया. He demolished the theatre and built the famous, और फेमस का क्या नाम था? ग्लोब थिएटर. This RB built the Globe Theatre, the very famous Globe Theatre, and it was basically
in South work across the river Thames. And besides the Globe Theatre, there were at best half a dozen other theatres, because at that time the theatres were doing roaring business. And all these theatres, small and big, famous and not even famous, presented the plays of the great, established or the upcoming dramatist of that age. Can you tell me, students, any names of those dramatists जिनके प्लेज यहाँ पे प्रेजेंट होते थे, या कह सकते हैं हिंदी में स्टेज होते थे? कुछ नाम बताइए. आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन टू आंसर ऑन द स्क्रीन. आई एम अगेन रिपीटिंग इट दैट कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दोज Elizabethan dramatists? एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट का नाम बताइए जिनके प्लेज इन डिस्टिंग्विश्ड ड्रामा सेंटर्स में पब्लिश होते थे या स्टेज होते थे. हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी? अगर बच्चे सुन पा रहे हैं तो लगभग सभी लोग जानते होंगे जो मैं क्वेश्चन को पूछ रहा हूं. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बिकॉज द क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड इज वेरी सिंपल. यस, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड. स्टूडेंट्स बताइए जल्दी, उनका नाम बताइए. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 नाम तो मुझे याद हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. द रॉक आर्या ने बताया है शेक्सपियर. चलिए, हमने शेक्सपियर लिख दिया नंबर 8 पे. इन्होंने सही बताया है. एक डिस्टिंग्विश्ड एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट है शेक्सपियर, जो मैंने नंबर 8 में रख दिया. अब इसी तरीके से हमें और नाम बताइए स्टूडेंट्स. बताइए बताइए. करण सिंह ने कहा है मार्लो. आर्या ने कहा है मार्लो. चलिए ठीक है, तो हमने मार्लो को रख दिया नंबर 1 पे. और बताइए. स्पेंसर नहीं हो सकता. स्पेंसर इज अ पोएट. स्पेंसर इज अ पोएट. मार्लो ठीक है. बेन जॉनसन नहीं. बेन जॉनसन नहीं है, इस समय का नहीं है. और बताइए. Now this is your call. You have to tell me. Students, जल्दी जल्दी बताइए. देखिए, दिस इज योर कॉल. आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चन नहीं पता है, दिस मीन्स कि योर प्रिपरेशन इज एक्चुअली नॉट गुड, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन विच a BA1 स्टूडेंट शुड नो. एक BA पार्ट 1 के स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए. इट इज सच अ सिंपल क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड. तो प्लीज बताने की कोशिश करिए इसको आप लोग. पहला आपने सिर्फ 2 सही बताए हैं अभी तक, मार्लो और शेक्सपियर. अभी 6 और बचे हैं. 6 आर लेफ्ट. नहीं, चौसर नहीं है. चौसर पोएट है 14th सेंचुरी का. आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिजाबेथन एज. इसका मतलब है कि आपको एलिजाबेथन एज में और चौसर के एज में डिफरेंस नहीं पता है. आर्या, जो आपका नाम इसमें लिखा है द रॉक,
क्या आप इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं हैं क्या? एल्बनस बेन जॉनसन, सर माय नेम इज एल्बनस फ्रॉम शिलोंग। नहीं, बेन जॉनसन नहीं है इस एज का। बेन जॉनसन इज नॉट इन दिस लिस्ट ऑफ एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। BA फर्स्ट ईयर, this means कि you have not studied English literature, Arya. You should be very, अपने करियर के प्रति बच्चों को आपको थोड़ा सा चिंताजनक होना चाहिए. You have to have something in mind that do you wish to be career oriented. चलिए, हमें 6 नाम नहीं मिले हैं. इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं, हमें लगता है कि सब इंग्लिश के ही स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन 6 नाम मिसिंग हैं. ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं. आई एम वेरी मच सरप्राइज कि आप लोग इस नाम को क्यों नहीं बता पा रहे हैं. आई एम अगेन गिविंग यू 30 मोर सेकेंड्स, अदरवाइज उसके बाद मैं ये सारे नाम लिख दूंगा. बताइए स्टूडेंट्स जल्दी से. LY, Lily, then Peel, then Green, Marlow, Lily, Peel, Green. अभी भी देखिए 3 बचे हुए हैं. Who can tell me these 3? ये देखिए पूरा लिस्ट हो गया. क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस ग्रीन, थॉमस लॉज, नैश, थॉमस कीड एंड विलियम शेक्सपियर. सिडनी नहीं है, सिडनी इज अ पोएट. करण सिंह, नो. दीज आर द मेन एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट जिनके प्लेज उन सारे ड्रामा सेंटर्स में जो नए थे, बने थे, वहाँ पे परफॉर्म होते थे. फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट सर, नो, नॉट एट ऑल. ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर नहीं है इस एज के. सो शुड आई रब दिस? बच्चों जल्दी जल्दी इंटरैक्ट करिए स्क्रीन पे. आप बहुत देर करते हैं तो उसमें टाइम खराब होता है. UGC नेट के कितने स्टूडेंट्स हमें देख पा रहे हैं? PGT, TGT के या IAS, PCS के? How many students are watching me here who are preparing for these verticals of English literature? So they should all know about this thing because this is the basic thing which I am teaching. So I am going to rub this. Any questions? Okay. Now we are going to discuss about हमने क्या लिखा है बच्चों? एलिजाबेथन ड्रामा. देखिए आपके सामने स्क्रीन पे हमारा जो है नंबर भी है और प्ले स्टोर का वो भी बना है, गूगल प्ले स्टोर का. यू कैन डाउनलोड इट एंड एज पर योर करियर
you can join the particular classes. Save your time, because time is precious and time is money. So this time will never return in your life. और हमेशा याद रखिएगा, करियर बनाने के लिए बहुत पहले से शुरुआत कर देनी पड़ती है. जब समय आ जाता है उस समय आप अपना कोई भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, then it will take again many more years. Fine. So Elizabethan drama की बात करें अगर हम, so the Elizabethan theatre had a very large, very projecting platform, very large and projecting platform. कैसा था? जो थिएटर होता था, एलिजाबेथन थिएटर बेसिकली had a very large and projecting platform, and this was open from 3 sides से खुला होता था. It was open on 3 sides. There were no wings. ये स्पेशलिटी थी. There were no wings, no back scenery, no curtains, no light effects, and most important, no actresses. No actresses. On the almost naked stage, the dramatist and the actor, पूरा स्टेज ऐसे समझ लीजिए कुछ नहीं है. Now what used to happen? The dramatist and the actor, both these people, they combined to produce the illusion of reality, and they had to cater to the taste of the mixed audience sitting in front of them. So this mixed audience which is sitting, they actually gave birth to mixed drama. Mixed audience gave birth to mixed drama, which combined both English and European. यहां पे जगह नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूं. The mixed audience gave birth to the mixed drama. यहां तक तो समझ में आ गया होगा. Which combined both कौन कौन से दो मैंने बताए? English and European, which combined both English and European, and even romantic and classical traditions. Romantic and J. So the mixed audience basically gave birth to the mixed drama, मिली-जुली ड्रामा, मिली-जुली सरकार जिसको कहते हैं, गठबंधन की सरकार, which combined both the European as well as the English and the romantic and the classical traditions. Fine.
Fine. Now we go ahead. जो नए बच्चे होंगे हमें देख पा रहे होंगे इस सेशन में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों. प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एंड you can download the application also and start your career and then see the fruits which you are going to get if you study good, students. Now, the literary men from Oxford and Cambridge, कुछ देर पहले मैंने उन्हीं literary men who were basically from Oxford and Cambridge like Lilly, Peel, Green, Lodge, Nash, Keed, Marlow, they are called university wits, and they were intellectual people, intellectual writers, learned people, learned scholars, and they made various experiments. जिसमें कि लिली की बात करें तो जॉन लिली ही एस्टैब्लिश्ड प्रोज एज द व्हीकल ऑफ कॉमेडी. लिली established prose as a vehicle of comedy. And he used to write, or he wrote, high comedies, and those high comedies dealt with cultured people. Dealing with cultured people and having refined feelings. And he is also taken as the first great phrase maker in English. Who added to drama the qualities of delicacy, ये सब जॉन लिली के बारे में. He added qualities of delicacy, grace, charm and subtlety. Grace, charm and subtlety. इसी के प्रोज को कहते हैं एक स्टाइल, इफ्यूजम स्टाइल. इफ्यूजम इसी के बुक से बना है, इफ्यूस्टिक स्टाइल. कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग प्रोज is euphuism, which is known with the name of John Lilly. So this is the way that how our students at OSN Academy, they are taught so that they may able to answer, they may have their concepts very clear, because history of English literature, social history of England is considered to be the vertebrata. It is considered to be the backbone. अगर ये वीक है तो बिलीव मी कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत मुश्किल आएगी. सो इसको मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इसको नोट भी कर सकते हैं. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बी इंटरैक्टिव हियर ऑन द स्क्रीन, सो दैट हमारा भी ये रहे कि बच्चे हमसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं. आपके मन में जो भी क्वेरीज हैं
या जो भी चीजें हैं आप उससे हमें पूछते रहिए। Any questions till now? Any questions? क्वेश्चंस पूछिए स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा उन ड्रामेटिस्ट के बारे में हु आर वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड, वेरी पॉपुलर एंड दे वर नोन फॉर देयर लिटरेरी परस्यूट्स एंड दे वर एक्चुअली ग्रेट स्कॉलर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं पील की। पील was a dramatist who actually embodied literary criticism in his jests. Means Peel embodied literary criticism in his jests. And अब वन लाइन बता रहे, बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है। ग्रीन जो बेसिकली जो है, ग्रीन ही इज अ ग्रेट प्लॉट मेकर, प्लॉट मेकिंग जिसको कहते हैं। एंड ग्रीन मेड द लव स्टोरी द सेंटर ऑफ द ड्रामा। ये पील की खासियत थी, ये ग्रीन की खासियत थी। एंड ग्रीन सप्लाइड दोज थिंग्स विच लिली लैग्ड। एंड व्हाट लिली लैग्ड? कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी एंड सिंपल ह्यूमन फीलिंग। ये ग्रीन ने सप्लाई किया विच लिली लैग्ड, दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी एंड द सिंपल ह्यूमन फीलिंग। नाउ वी कम टू कीड. Keat was a much greater dramatist than even Lodge or Nash. If we compare Thomas Lodge and Nash, then Keat will be taken as a much greater dramatist. Who became very popular with his Keat's Spanish tragedy. In this tragedy, he has achieved many things. And he is the first dramatist to discover the relation between plot and character. Relation between plot and character. He was the person who could discover the relation between plot and character and how to study their interaction. इसको कहते हैं interaction. इधर का इधर, उधर का इधर. And how to study their interaction. So he introduced plenty of action on the stage in place of dialogues, Lily's dialogue and wit. And he also was a person, a dramatist, who introduced the revenge theme. He also introduced the revenge theme on the stage and gave a new type of tragic hero. And who was that type of tragic hero? The hesitating hero. He gave the hesitating hero. Hesitating hero. So these are, see, the qualities. Good afternoon, Gulshan Kumar.
सर इंग्लिश में एमए करना है जेएनयू से। अगर आपको गुलशन कुमार एमए करना है जेएनयू से, विच इज द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, then you are actually at the right place. I have been teaching the entrance examination for GNU past 2 decades. So you have to just either contact me or you have to download the application from the Play Store, and MA English entrance vertical or classes are going on in that panel. सर कुछ टिप्स बताइए। गुलशन, टिप्स किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल नहीं होती है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ड अपने जीवन से हटा दीजिए। देयर आर नो टिप्स, देयर आर नो ट्रिक्स फॉर क्वालिफाइंग सच ग्रेट एग्जाम्स, सच बिग एग्जामिनेशंस। It is only the proper studies, the proper syllabus, the content-rich classes, the understanding of the entire syllabus, and then when you complete these things, then you will go to the examination, then you feel happy, yes, मुझे सर ने पढ़ाया था तो आज हम इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। So this is what टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने जीवन से हटा दीजिए। अगर टिप्स और ट्रिक्स के चक्कर में आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, सो इट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। और इंग्लिश लिटरेचर में तो टिप्स और ट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं, क्योंकि it is a theoretical examination, it is a theoretical base this thing subject। जो मैंने आपको तरीका बताया, it is as simple as anything। The MA entrance panel is and the application, you just go it or you just contact me। Fine, Gulshan, happy? And after going those great authors and to know about them technically, personally, one-to-one, we come to Marlow now, one of the most sought after dramatists by the universities who are teaching Marlow: Dr. Faustus, Tamburlaine, G. of Malta, Edward, and yes, Marlow is unquestionably, मतलब क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, the greatest of the university wits। गुलशन बेटा समझ गए आप? आपकी जो क्वेरी थी वो आप समझ गए? कोई दूसरी क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। जेएनयू की तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों। मार्लो इज अनक्वेश्चनेबली द ग्रेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, एंड टिल हिज टाइम, मतलब जब तक ये था, टिल हिज टाइम नो वन हैड क्रिएटेड सच डेमोनिक फिगर्स। It was the capacity of Marlow only who could produce such demonic figures like Tamburlaine, like Faustus, like Barabbas, Faustus, Tamburlaine, whose tragic doom is compelled by forces within themselves। और उसकी जो एडवर्ड 2 थी, his Edward 2 is the first historical play, ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, is the first historical play। Marlow represented the intensity of his age in its love for military power, love for wealth, love for knowledge, and above all students, चाहे कुछ भी हो, above all, he gave to Shakespeare
the most powerful vehicle of poetic drama. And what is that vehicle? Yes, ऐसे क्वेश्चन लिखा जाता है. कुछ भी हो जाए, he gave Shakespeare the most powerful vehicle of poetic drama, and that is known as blank verse. And all these elements were fused in the works of Shakespeare. See the Jalwa of Marlow. And sir, what are the features of Elizabethan age? यही तो बात हो रही है, यही तो फीचर्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं. सर अभी मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ और सर क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होगी JNU एंट्रेंस के लिए? यस गुलशन, आप BA सेकेंड ईयर में हैं. सो अगर आप इतने बड़े सपने को ड्रीम कर रहे हैं तो BA पार्ट 2 क्या BA फर्स्ट ईयर से बच्चे प्लान करने लगते हैं और वो पढ़ने लगते हैं. सो BA पार्ट 2 में है. सो दिस इज द राइट टाइम दैट यू शुड बी कवरिंग योर ओन सिलेबस फॉर योर MA इंग्लिश एंट्रेंस, जो कि आपको BA टेस्ट 2 और BA थर्ड ईयर में भी बहुत ज़बरदस्त मदद करेगा. आपको नंबर्स एक्सेल करने में, इंस्पाइट दैट आप टॉप भी कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, अगर आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देंगे. क्योंकि अगर इसमें 6 महीना साल भर और डिले करेंगे देन ऑटोमेटिकली यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट दैट एग्जामिनेशन. मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है उससे कई साल पहले उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए. सुरभि सिंह, गुड आफ्टरनून सुरभि. बेपा, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक, नाउ बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर मुझे ये क्लासेस अच्छी लगी. और जो पहली बार है, जो जानते हैं या जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं OSN में, there are hundreds of students who are studying in the OSN platform through the application and they are making their careers. But हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे पहली बार जान रहे हैं या वो जानते हैं और उनको अच्छी पढ़ाई करना है. So they can only be at OSN Academy. Saddam Hussain, thank you first for your class. सद्दाम, फॉर विच वर्टिकल यू आर प्रिपेयरिंग? आप किस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं सद्दाम? सर मुझे TGT के लिए प्रिपेयर करना है. सुरभि, आपको TGT के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको स्क्रीन पे देखिए, आपको OSN एकेडमी का प्ले स्टोर पे लिंक दे रहे हैं और आपको स्क्रीन पे वो भी दिखा रहे हैं. और वेरी सिंपल, so many students have qualified and they have joined their colleges in the last results. Hopefully we are going to get thousands of seats for TGT, PGT after the elections are over. So the students who are career oriented, they have already started the class list. So Surabhi, I would advise you that if you are a career oriented girl, then you either download the application OSN Academy from the Play Store and directly get inside and go for the TGT. उसमें TGT अंदर लिखा हुआ है and directly you can join the class. It is all the automated system and immediately join it. And if you have any doubts, you can contact me. The number is given on the screen. You can even WhatsApp me. Don't waste your time. Nageshwar Prasad, मुझे PGT qualify करना है. Nageshwar, again the same thing which I have told to Surabhi. The PGT batch is also there in the application. You have to just download the app. And if any doubts, you can contact me. The number is given there and you can WhatsApp me also. It is as simple as a child even can download and join the classes. So it is so simple and the application is so beautiful and so good and so technically oriented and have a nice learning experience with me. And Sudhir Kumar, again the same thing which I told you, Nageshwar and Surabhi, the LT batch is also going there in the application, and there was a lot of request by the LT students of Uttar Pradesh. So the LT batch is also going there. Every batch has its own syllabus.
सो ये याद रखिएगा कि जितने भी वर्टिकल्स हैं सबके सिलेबस अलग हैं, सबकी जो पढ़ाई है वो सिलेबस के हिसाब से चल रही है. द ओनली वन थिंग इज कॉमन, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. सो सुरभि, सुधीर, सो एलटी का बैच चल रहा है. एलटी का बैच बच्चों को इसलिए भी जल्दी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि एलटी का जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा है. सो बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ दैट यू हैव टू कंप्लीट एंड यू हैव टू कमांड योर कोर्स. So those who wish to excel, they must not waste their time. So the same thing I would say to Sudhir and to Surabhi and to Nageshwar. The numbers are given and you all know everything. Apart from this thing, I would just like to say those who are watching me that those students of IAS, PCS or UGC NET PGT, those who won the offline classes, now once again the corona period and the COVID Omicron system is going away from India. Luckily and hopefully we are going to start our new batches of the offline classes from February. So those students who can manage to be a part of my direct classes from the entire country, as they used to come before COVID from the entire country in the past 24 years. So they can come down to Lucknow, they can approach me, they can contact us, they can take the details on the WhatsApp or telephone, and they can plan to be a part of OSN from the February, which is just few days ahead for the offline classes. Sir, I want a good guidance. Who guided me to the right direction? Surabhi Singh. Surabhi, you are already getting the best guidance and you can even talk to me. So I am a professor in English. I am teaching past 24 years. The entire country knows OSN Academy. So there is nothing about it. You are watching me here and you are talking to me. And just only one thing, study good and save your time. And कई साल पहले, कई महीनों पहले से तैयारी बच्चे शुरू कर देते हैं. और आप विश्वास करिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, जिन्होंने बीए पार्ट 1 में और बीए पार्ट 2 में शुरू कर दिया था. यहाँ बच्चे आज की डेट में एमए पार्ट 1 और एमए पार्ट 2 में भी क्लास नहीं शुरू कर पाते हैं. कहते हैं सर हम एमए कंप्लीट कर लेंगे तब करेंगे. अब उनसे कितनी बार हम समझाएं बेटा कि एमए का जो कोर्स होता है दैट इज ओनली 10-15% ऑफ नेट. सो अगेन व्हाई टू वेस्ट सो मेनी ईयर्स अहेड ऑफ इट? इफ यू हैव गॉट माई गाइडेंस यू शुड स्टार्ट much before. Any more questions, students? So I would like to discuss and guide you everything one to one. So with OSN Academy, no issues, no worries. It is a very comfortable system because my students, they directly interact with me. And subscribe the channel, those who don't know OSN and they have come to this channel for the first time. So now again we are going to continue with the class. जहाँ से हम पढ़ा रहे थे. सुधीर सर, फी फॉर एलटी इट इज वेरी लेस स्टूडेंट्स. सुधीर आप जरा जाके देखिए, द फी ऑफ जीआईसी इज फी ऑफ जीआईसी इज 3,999. TGT is only 3,999. PGT is only 4,999 and LT is only 4,999 and net is only 6,666. So these are such small fee for 6 manuals. And the UGC net, a very special batch, as I have told you in the starting, that I can show you the screenshot once again for the UGC net students, that it is a wonderful new session. For the panel is for 1 year and the fee remains the same, where you are getting the physical study material packet also at home and the paper one also free, and 1 year panel students. So don't miss this great opportunity of getting 1 year panel with the physical copy study material at home and with all the guidance with the entire syllabus. You will really be blessed if you follow my guidance. Now फाइन, आप एप्लीकेशन ज्वाइन करिए, उसका एक्सपीरियंस देखिए. यू विल बी रियली, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है यूजीसी नेट बच्चों के लिए. दिस इज अ न्यू बैच जो अभी हार्डली 2 या 3 दिन पहले शुरू हुआ है. सी रिटन देयर कंप्लीट क्लासेस ऑफ द एंटायर सिलेबस, यूनिट 1 to यूनिट 10. हार्ड कॉपी ऑफ द स्टडी मटेरियल विल बी सेंट टू यू एट होम. 1 year validity, direct connection with me and personal problem solvings and career guidance, which always I have been doing. And the fee remarkable, only 6,666. that is for 1 year. Thank you. Net offline fee क्या है? Supriya Pandey. Supriya, you belong to which city? And you just have my number which is on the screen. You just WhatsApp me and
take all the details on the WhatsApp, the PDF content, and then see and analyze. We are going to start the offline classes very soon because the students are connecting with us. They are asking, even the UPSC students, IAS mains students, they are also asking for the offline classes. So I've informed all my online classes students also, those who can come, because one thing is very important. जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं already IAS PCS बैचेस में all over India, I actually want to share one thing. Yes, रवि आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके, नो इश्यूज. सुप्रिया पांडे आप लखनऊ में हैं, देन इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. देयर आर सो मेनी गर्ल्स इन लखनऊ who have already joined the IAS mains and even the PCS mains UP with me under my guidance with the application online, but because they were in the jobs they could not be a part with the offline, and due to the corona period also, but now it is getting over. So Supriya, you can even contact me, you can talk to me, you can meet me also, because you are in Lucknow. It is a blessing for you that you are in Lucknow, and whatever you wish you can go. You can go for the online, you can go for the offline, you can go for the both. So my number is given on the screen, Supriya. And one thing more, आप किस टारगेट ईयर को करना चाहती हैं? You are targeting the 2022, 2023 or 2024. Accordingly, I will guide you. Thank you, Ravi, that you have been my student, and you appreciate this, that yes, nobody gives this quality, because see, the quality basically is the experience. And as a government professor, as a teacher of this high level examinations, 25 साल 24 साल बच्चा बहुत होते हैं, तो हर बच्चा चाहता है कि वो ऐसे जगह पढ़े जहाँ पे वो क्वालिटी, वो एक्सपीरियंस मिले जो हम समझते हैं कि वो बड़ा मुश्किल होता है कहीं मिल पाना. सुरभि सिंह, ये अकेडमी लोकेटेड इन लखनऊ महानगर, वन ऑफ द वेरी पॉश एरियाज ऑफ लखनऊ, दैट इज़ महानगर. So Mahanagar में it is located in a very the first floor of Tender Heart School. It is a very popular name in Lucknow, Tender Hearts School, junior wing, and the first floor is OSN Academy, Mahanagar, Lucknow. But any student who has to come, who has to meet us, meet me personally, they will just WhatsApp me on the number given on the screen, take the location, take the address, take the timing, and then come and meet me after having a telephonic conversation with me. Fine, Supriya, fine, Surabhi. I hope that those students who are listening me, they should now understand the value of time, the value of the credibility, the value of getting yourself आपको आपका करियर मिल जाए, आप अच्छे से सेटल हो जाएं, एक लाइफ आगे से बढ़ना शुरू हो जाए. And for that, students actually need career guidance, career counseling, good classes, content rich classes, and a guidance which has an experience like a father gives you. So I am like a guru, like a teacher, like a professor, like a mentor, and like a father to my students. So always believe that OSN is always going to give you the best. In offline classes, UGC net batch course videos बहुत कम है, only 6. No, it is more than 100. The classes are approximately 100, but the new batch has started, so new batch has only I think 3 to 4 classes. So the old batch has 62 classes, where the classes will reach up to 100. So there are approximately 100 classes, maybe even 110, maybe 120, because in the running classes nobody can say कि हम कितना अभी पढ़ाएंगे. टीचर को ये नहीं पता होता कि वो कितना उसको पढ़ाना है. ड्यूरेशन भी कम है वीडियो का. नहीं, ड्यूरेशन कम इसलिए होता है क्योंकि 30-35 मिनट्स का जो वीडियो होता है उसका कंटेंट इतना ज़्यादा रिच होता है कि बच्चा उसको सुनने के बाद थकने लगता है. ही फील्स दैट आई शुड गेट रेस्ट. सो जहाँ उसको फीलिंग होती है रेस्ट करने की, वहाँ पे हम रोक देते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास जब ले तो ही शुड टेक विद द फुल एनर्जी. बट इफ़ यू डोंट लाइक OSN Academy, नो वरीज Mukesh. It is only for those students who understand what is quality, what is content, and what to go about it. In the last batch, you can see on the screen 140 selections, 11 JRF. So minutes don't count. You study, you can go to the other platforms, you can study 1000 hours, 2000 hours of UGC net, and you will never get any content. So content is important. 30 minutes, 40 minutes especially इसलिए पढ़ाया जाता है कि बच्चा थके ना.
अगर 1-1.5 घंटे की क्लास होगी तो बच्चे के आंख में नींद आ जाएगी. So I cut my classes into these sections, but the students are getting the entire course of 10 units. So understand this thing that 10 units I have divided. So 30 minutes or 40 minutes or 60 minutes, that is not a matter. Matter is content. You speak continuously for 2 minutes in front of the camera and you see the content. 30-35 मिनट जिस दिन आप डायरेक्ट बोल लेंगे, you will feel that is the content of approximately 20-25 pages. 20-25 पेज लिख सकते हैं आप मेरे 35 मिनट के डायरेक्ट कंटेंट में, लाइव कंटेंट में. So, is OSN Academy branch in any other city? No, it belongs to me, Surabhi. The students before COVID, they used to come from Kashmir to Port Blair, from Assam, Guwahati to Rajasthan, from all the top universities and the top cities of India, even JNU, Delhi University, Chennai University, Presidency College, top universities of India. The students used to be a part of OSN. Past 20 years, they used to live in the hostels here and they could qualify NET, JRF, and now they are present assistant professors and associate professors in big universities in India. So that is OSN. So once again, from February, we are planning to take the offline classes. So those who plan to, they may contact us and they may start it. Fine, I think I have told a lot. Now I should again begin the class. So now, yes, come once again, we should now be, हम क्या पढ़ा रहे थे, मैं ध्यान से उतर गया, मार्लो पे थे. Yes, अब आता है स्टूडेंट्स बेन जॉनसन. Ben Jonson, students. Ben Jonson, you must have known this name, a great name, and who had every reason not to like Shakespeare, paid him the highest tribute when he said. Matlab, again I am telling you that Ben Jonson was a person who had every reason not to like Shakespeare, but he was the person who paid him the highest tribute. उसके पास सारे वो रीजन थे कि वो शेक्सपियर को नापसंद करे, एंड यही वो पर्सन है जिसने हाईएस्ट ट्रिब्यूट दिया पूरे वर्ल्ड में, संसार में, शेक्सपियर को. और कोई बता सकता है कि वो ट्रिब्यूट क्या है? कोई लिख के बता सकता है मैसेज पे कि क्या लिखा था उसने, क्या बताया था? Those who are preparing, they can even tell me that yes, he has written. Should I tell or I should wait for you? Should I tell students or should I wait? हाँ मुकेश, न्यू बैच शुरू हो गया है 3 दिन पहले, 3 days before. You just open the application and you, अभी मैंने स्क्रीन पे भी बच्चों को दिखाया था, सर को किस कोर्स के लिए, UGC नेट का कोर्स शुरू हो गया है 2 दिन पहले, 2 days before. एंड आई हैव जस्ट टोल्ड दैट इसका 6 महीने की जगह 12 महीना कर दिया गया है. एप्लीकेशन पे 6 महीना बच्चों को फ्री मिल गया है. एंड इवन यू आर गेटिंग द स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी free of cost with this small fee of 6,666 only, which was for 6 months but now it is for 12 months. So grab this opportunity students and just see the wonders. सर अभी मुझे आपकी क्लासेस कब ज्वाइन करनी पड़ेगी? जेन्यू गुलशन, मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस देखिए, हमारा नंबर नोट कर लीजिए, आपने कर लिया होगा, और मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कॉल करिए इस सेशन के बाद. सर रिपीट क्वेश्चंस प्लीज. सुरभि कौन सा क्वेश्चन रिपीट करें? आई एम नॉट गेटिंग दिस. विच क्वेश्चन आई शुड रिपीट? विच क्वेश्चन शुड आई रिपीट? अच्छा हाँ, क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे या सबसे कि बेन जॉनसन हैड एवरी रीजन नॉट टू लाइक शेक्सपियर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज द ओनली पर्सन हु हैज पेड शेक्सपियर द हाईएस्ट ट्रिब्यूट. और जब हाईएस्ट ट्रिब्यूट उसको दिया तो क्या लिखा था उसने हाईएस्ट ट्रिब्यूट देने के? हम वो लाइन जानना चाह रहे हैं. क्या आपको वो लाइन पता है? कई बार बड़े एग्जाम्स में, नेट, पीजीटी, टीजीटी में, वो ऑप्शनल में पेपर में आ चुका है कि ये बात किसने किसके लिए लिखी. चलिए मैं लिख देता हूं. उसने लिखा सोल ऑफ द एज, exclamation mark, soul of the age, then
द अप्लॉज, डिलाइट, ऐसे करके डिलाइट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, द वंडर ऑफ अवर स्टेज. So these are the lines which was written by Ben Jonson for Shakespeare. सुरभि, मैंने बेटा आंसर दे दिया है. जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए क्या बोला उसके तारीफ में, तो वो ये बोला, सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, डिलाइट, वंडर ऑफ अवर स्टेज. एंड शेक्सपियर्स ड्रामेटिक एक्टिविटी, शेक्सपियर की जो ड्रामेटिक एक्टिविटी है, शेक्सपियर्स dramatic activity covers 24 years. 24 years. और कब से कब तक ये आपको डेट भी जानना है, 1588 to 1612. देखिए 12 साल इधर 12 साल इधर, 24 साल. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड कितने प्लेज उसने लिखे स्टूडेंट्स? He wrote 37 plays. और आपने एक प्रोफेसर का नाम सुना होगा, ही इज प्रोफेसर डाउडेन. अगर नहीं सुना है तो नोट कर लीजिए, कहीं पे आप लिख सकते हैं, क्रिटिक को कोट कर सकते हैं. यस सौरभी, ही रोट 37 प्लेज. एंड प्रोफेसर डाउडेन ने जब शेक्सपियर को के माइंड को ट्रेस किया, लाइक दिस, प्रोफेसर डाउडन इन ट्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ शेक्सपियर्स माइंड एंड आर्ट, ही डिवाइड्स हिज ड्रामेटिक करियर इनटू 4 पीरियड्स. मतलब प्रोफेसर डाउडन ने 4 पीरियड्स में उसके करियर को डिवाइड कर दिया. व्हेन ही वाज ट्राइंग टू रिसर्च एंड टू actually cultivate his mind, his art, his characterization, his plot, his genius. तो उसके जीनियस को 4 भाग में काट दिया. फाइन. सो अब समझिएगा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिलाइटफुल सेशन फॉर यू, बिकॉज इसको बीए पार्ट 1 से लेकर के आईएएस मेंस तक के स्टूडेंट की जरूरत है. Now, very important it is going to be now. 4 पीरियड में बांट दिया, तो जिसको कहते हैं फर्स्ट पीरियड. जब ये कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स क्लियर होंगे ना, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आपका निकल जाएगा और आप उन लोगों से बहुत आगे हो जाएंगे जो लोग इधर उधर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या मार्केट की गाइड बुक से पढ़ के सोचते हैं कि वो कोई भी एग्जाम कर ले जाएंगे. इट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल स्टूडेंट्स. सो ऑलवेज स्टडी गुड. सो इन द फर्स्ट पीरियड की आपको डेट पता होनी चाहिए, दैट इज 1588 to 1594. Now, what is this period denoting? Shakespeare is an apprentice. Shakespeare is an apprentice in a workshop. How many of you people were knowing about this thing? हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमने जो आपको बताया ये लिखिए, बताया फर्स्ट पीरियड शेक्सपियर क्या था. ही वॉज एन अप्रेंटिस इन द वर्कशॉप. कितने लोग जानते थे स्टूडेंट्स? टेल मी, सही सही बताइएगा. हाउ मेनी ऑफ यू वर नोइंग? And the plays of this first period, together with 2 of his great poems, Venus and Adonis, and Rape of the Lucrece.
again, the plays of this first period, along with Venus and Adonis and Rape of the Lucrece, they are marked with youthful exuberance. They are marked with youthful exuberance. Marked with youthful exuberance. And जैसे मैंने आपको बताया था एक टर्म यूफिज्म, तो इसमें भी है यूफिस्टिक एक्सुबरेंस ऑफ, नहीं, यूफिस्टिक एक्सट्रावेगेंस ऑफ लैंग्वेज, यूफिस्टिक एक्सट्रावेगेंस of language. And the third thing, frequent use of the rhyming couplet. Frequent use of RC. RC का मतलब होता है rhyming couplet. सर OSN Academy ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च हुए कितना टाइम हुआ है? द न्यू बैच, आई हैव जस्ट टोल्ड यू मुकेश, हार्डली 2 to 3 days. आप ऐप खोलिए, ऐप खोलने में अंदर जाइए, देखिए वहां पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसमें लिखा है UGC नेट /JRF /सेट 2022. उसमें ऊपर लिखा है फिजिकल स्टडी मटेरियल एंड 1 year वैलिडिटी, 1 year. दिस इज द चेंज विच यू आर गेटिंग. हरीश मिश्रा, प्रणाम हरीश. हरीश, व्हाट आर यू डूइंग? फाइन. सो ये देखिए, ये आपको अभी मैं और बताऊंगा. इसमें देखिए, इससे कनेक्टिविटी हो जाती है. अगेन द फर्स्ट पीरियड, दिस ब्ला ब्ला, एंड शेक्सपियर वॉज एन अप्रेंटिस इन अ वर्कशॉप. एंड एज फार एज फर्स्ट पीरियड plays are concerned, which also includes the Venus and Adonis and the Rape of the Lucrece, which gives us the youthful exuberance and the euphemistic extravagance of the play, and also the frequent use of the rhyming couplet. Fine. Now see, I'm rubbing this portion. Now, I was just going to ask very simple question. फटाफट जवाब दीजिएगा बच्चों इसका. हम बस ये जानना चाहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे, हमारे भी बहुत सारे बच्चे लाइव होंगे इस समय. 1 2 3 4 और 1 5. हम बस ये जानना चाह रहे हैं आपसे 1 2 3 4 and 5. नाउ फटाफट चेक करिए अपने को और मुझे फटाफट बताइए. दिस इज योर सिंपल टेस्ट. और ये अपने को भी टेस्ट करिएगा आप कि किस एग्जाम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं. और सर ने इतना सिंपल सवाल आज पूछा है. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर मी इमीडिएटली? आप क्रोनोलॉजी में भले मत दीजिए, यू डोंट गिव द आंसर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, but you just give me the names of these 5 players of the first period. Immediate, within 60 seconds. Time starts now on the screen. आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स. 60 seconds. जल्दी जल्दी टाइप करिए फटाफट. सी ऑन द स्क्रीन, उन बच्चों के लिए जो पहली बार हमें देख रहे हैं OSN Academy को, द नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन. द कॉलिंग नंबर, द व्हाट्सएप नंबर, इंग्लिश लिटरेचर, होम साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड HR, and UGC नेट, JRF, UPSC, IAS, PCS, PGT, TGT, GIC, MA English entrances, Ph.D. entrances, and lot many examinations as well, which are going to come in the application in the near future. So you can take all the classes. You are watching me here live, and there are so many other classes at the YouTube channel. The sample classes are also given at the application, and if you like, don't at all waste your time, students, especially those students who are aiming at UGC net or the GIC mains, which is going to conducted on March.
तो मार्च के बच्चों को मैं फिर से बता दूंगा कि आपने पढ़ाई आप तेज कर दीजिए। इतने सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। वो अभी मैंने कल भी क्लास ली थी जीआईसी की, मेरी लास्ट क्लास थी जीआईसी की, जिसमें मैंने पढ़ाया है हयावदन, गिरीश कर्नाट की हयावदन। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। आई हैव टेकन अ क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ हयावदन, एक्सप्लेन्ड इट इन द GIC पैनल. So those students who still wish to be a part of GIC, they should not at all take themselves away from this GIC panel, क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं that is something which you cannot purchase in terms of any money, believe me. क्योंकि GIC के एग्जाम्स ना बार बार आते नहीं हैं। तो एक बार आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है तो कोशिश करिए कि आप मेंस थ्रू हो जाइए और जॉब एक्वायर कर लीजिए। हेनरी फोर आपने बताया, सुरभि और अंकित कुमार। अंकित नमस्ते। अब देखिए ये बड़ी दुख की बात है कि इतने सारे बच्चे लाइव हैं हमारे साथ, हमारी बात को सब सुन पा रहे होंगे, लेकिन अभी तक किसी ने हमको फर्स्ट पीरियड के 5 नाम नहीं बताए। और सुरभि सिंह आपने हेनरी 4 कहा है, ये दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें इतने सरल क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। आपको यह भी पता चलेगा कि देखिए पढ़ना ऐसे होता है। हमारे जितने भी पैनल्स चल रहे हैं हमारे एकेडमी में, हमारे एप्लीकेशन पे, कोई भी चाहे वो GIC हो, LT हो, PGT हो, IAS हो, PCS हो, MA इंग्लिश एंट्रेंस हो, एवरी क्लास इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं, जो हमें पढ़ रहे हैं उनसे कहते हैं बेटा क्रोनोलॉजी को मत तोड़ना। आज इस सेशन के द्वारा देखिए मैं क्रोनोलॉजी में मैं ले रहा हूं थिएटर, ड्रामा, यानी एवरीथिंग इज क्रोनोलॉजी। जरा सी क्रोनोलॉजी मिस करेंगे तो वो स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को समझिए स्टूडेंट्स की, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू पीपल दैट यू कैन कमांड योर लिटरेचर एंड यू कैन say with confidence in the interviews that I am a student of OSN, I am a student of Dr. Agrawal, and that is why I am here in front of you to face this great interview. बल्कि प्रोफेसर्स पूछते हैं हमारे स्टूडेंट से कि आपको पढ़ाया किसने है, कि यू नो सो मच, यू नो अफ्रीकन, यू नो करेबियन, यू नो ऑस्ट्रेलियन, यू नो कनेडियन, you have so much knowledge of so many literatures. Then the students sometimes they say, so this it was only the guidance of Professor Dr. Agrawal, because of which I could qualify NET, even JRF or any other exam, and that is the reason why I am sitting in front of you. So ये अच्छा लगता है और यही खुशी एक टीचर को, एक गुरु को, एक प्रोफेसर को चाहिए आपसे। सुरभि, सॉरी आई विल ट्राई टू लर्न। नहीं कोई दिक्कत नहीं सुरभि, आपका जो टारगेट है आपने जो लिखा है कि आपको TGT PGT करना है, so you are at the right time, right place. You just download the application and get into the panel. Loves Labour's Lord, हरीश ने लिखा है Loves Labour's Lord। चलिए एक क्वेश्चन पहला आंसर सही आया, Loves Labor Lost। पहला आया लव्स लेबर लॉस्ट। बहुत देर बाद एक आंसर आया, वो भी सिंगल आया, अभी तक और नहीं आया है। तो हम चाहते हैं कि आप और भी हमें नंबर्स बताएं। एक आया है, 2 3 4 5 बचा हुआ है। हम अभी बता सकते हैं, सेकंड से बता सकते हैं, लेकिन आई एम गिविंग यू टाइम, आई एम गिविंग यू द टाइम सो दैट यू मे टेल मी। मैं ही बता दूं, मैं टाइम बहुत हो रहा है फिर। चलिए पांचवा मैं बता देता हूं, रोमियो एंड जूलियट। स्क्रीन पे दिख पा रहा है ना रोमियो एंड जूलियट? ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, लव्स लेबर्स लॉस्ट, और मैंने आपको बताया रोमियो एंड जूलियट। अभी भी देखिए 3 बचे हुए हैं। किसको हमसे सिल्की चॉकलेट चाहिए? मैं आपको सिल्की चॉकलेट दूंगा कैडबरीज की। हमें 3 नाम और बताइए जल्दी से। बताइए, नहीं बता पा रहे हैं अभी? कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना,
अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। देखिए क्या प्रॉब्लम थी, सिंपल, ऐसे पढ़ा जाता है बच्चों, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएंगे आप अगर आपने सिस्टम से नहीं पढ़ा। द प्लेस ऑफ दिस पीरियड आर लव्स लेबर लॉस्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड रोमियो एंड जूलियट। एंड इन दीज प्लेज स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ ले, इन दीज प्लेज देयर इज लिटिल डेप्थ ऑफ थॉट एंड कैरेक्टराइजेशन, लिटिल डेप्थ ऑफ थॉट एंड कैरेक्टराइजेशन। हम लोग स्टूडेंट से इंटरव्यू में ये जरूर पूछते थे कि स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द स्पेशलिटी फॉर द फर्स्ट पीरियड ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेज। ये प्लेज किस लिए जाने जाते हैं, इनके अंदर किस बात की कमी है। तो उस बच्चे को नंबर मिलता था जो ये बताता था कि सर दीज प्लेज आर द फर्स्ट phase plays which used to have the little depth, the intensity was not there and characterization में it was little depth। जैसे जैसे वो मेच्योर हुआ वैसे वैसे चीजें बढ़ती चली गई। एंड इवन कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात करें, जहां जहां कॉमेडीज हैं, इवन हिज कॉमेडीज शोड इवन सो हिज कॉमेडीज शो ग्रेटर ओरिजिनलिटी। फाइन, तो ये सारी चीजें आपको जानना होगा एंड देन इट फील्स गुड टू एनालाइज द आंसर। फाइन, एनी क्वेश्चंस नाउ? याद आ गया सर? देखिए बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है बच्चों, स्टूडेंट्स। एक हमेशा याद रखिए, आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारे आपके पास मैटर होगा, लेकिन जब आप स्क्रीन पर पढ़ते हैं, जब आप क्लास में पढ़ते हैं, देन वो चीज़ें ज़िंदगी में कभी भूलती नहीं है। मेरे ऐसे ऐसे बच्चे जो PCS क्वालिफाइड हुए, उनका ये कहना था कि सर आपकी क्लासेस से क्या हुआ कि जब एग्जाम में हम एग्जाम देने गए, सो ऑल दीज थिंग्स केम इनटू माय माइंड इन द सबकॉन्शियस कि सर ने वो बताया था। अदरवाइज बुक से पढ़ करके द स्टूडेंट्स दे गेट बोर्ड और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं आपके पेरिफेरी से। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस of the classes, and that too the classes which I give to my students, that is indispensable। yes, midsummer night's dream। तो बहुत समय के बाद बेटा आंसर नहीं दिया जाता है। हमेशा याद रखिए कि whenever you are in the examination, where you are in the interview, time waits for none। आपके पास टाइम नहीं है, नहीं बता पाए, the professor will घंटी बजा देगा और आपको वहां से हटा देगा। तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मेहनत करिए तो सेंसिबल तरीके से और प्रॉपर तरीके से, जिससे कि एक बार में ही, अब जैसे पिछले बार में जो 25th रैंकर है वो हमारी स्टूडेंट है एकता सिंह। सो शी इज एक्चुअली वन ऑफ द स्टूडेंट, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड। सो इसलिए मैंने बताया उसका नाम, चूंकि शी इज ए 25th रैंकर। सो प्रिंस मैथ्यू, हाय प्रिंस, which examination you wish to qualify, Prince? Now we will talk about जैसे मैंने आपको फर्स्ट पीरियड बताया था, सेकेंड पीरियड है। फर्स्ट पीरियड कहाँ खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स? 1594 पे। तो ये 1594 पे ये शुरू हो जाएगा और ये 6 साल का होता है। दिस इज सेकेंड पीरियड, रिमेंबर दिस ऑल्सो। नाउ क्या कोई हमको बता सकता है, जो हमें सुन पा रहे हैं, ये जो पीरियड है ये किस लिए जाना जाता है? 2 चीजों के लिए जाना जाता है, दिस एंड दिस। दिस सेकेंड पीरियड इज नोन फॉर 2 थिंग्स। जो भी स्टूडेंट हमको बताएगा उसके घर में हमारी कैडबरीज की सिल्क चॉकलेट पहुंचेगी। बिलीव मी, आई एम गिविंग यू दिस बेट। दोज हूएवर विल टेल मी, आई विल सेंड यू by courier a big silk chocolate of Cadbury's। मेरे तरफ से ये उपहार है। बांके लाल, ग्रामर इज ऑल इंक्लूसिव इन GIC, PGT, TGT। जितने भी पैनल्स में ग्रामर है, ग्रामर इज इंक्लूडेड in the syllabus which is being taught।
नेट एग्जाम। प्रिंस मैथ्यू, आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, सो देखिए अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, अ वेरी वेरी स्पेशल बैच 2 days बिफोर हैज स्टार्टेड, सो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप डोंट मिस दिस बैच बिकॉज इट हैज एक्सक्लूसिव फीचर्स विच none can even think about giving this thing. It is OSN only who has provided UGC NET students such a great opportunity. See on the screen, Prince, and download the application OSN Academy from the Play Store. देखिए प्रिंस, सामने आपके लगा हुआ है, ये आपको अंदर दिख जाएगा जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे OSN Academy का प्ले स्टोर पे. You go and search it, you will find this thing, and you can even WhatsApp me on the given number on the yellow screen. Okay Prince, so let us now start the class again. तो बच्चों बताइए, who wants the silk chocolate to be couriered to your house? This is from my side. Who will tell me that what are those two things which is known for Shakespeare's second period? जौनपुर के बहुत सारे बच्चे बाकेलाल पढ़ रहे हैं, जौनपुर के बहुत सारे बच्चे UGC नेट PGT TGT GIC में जौनपुर के ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पूर्वांचल के, बनारस के, आजमगढ़ के स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वालिफाइड भी हमारे यहाँ से. अभी एक आजमगढ़ का एक स्टूडेंट है वैभव, ही इज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, ही इज़ इन द गवर्नमेंट जॉब एंड ही वाज माय स्टूडेंट हु क्वालिफाइड एंड नाउ ही इज स्टडिंग द GIC मेंस, and after GIC mains he will be also studying the UPSC mains. So the students, they get step by step under my protection. Once they are able to qualify the low level exam, then they proceed for the next and then they proceed for the next. So जल्दी बताइए बच्चों कि सेकेंड पीरियड जो हमने पूछा इज अ पीरियड ऑफ टू थिंग्स. यहाँ पे एक शब्द होगा, यहाँ पे एक शब्द होगा. आप लोग बहुत देर लगा रहे हैं. क्लोज थिएटर एट दिस टाइम. नो 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 नो, नॉट एट ऑल. नेहा मौर्य ने बताया है कॉमेडीज. नेहा मौर्य ने एकदम सही बताया है. अगर ये दूसरा आंसर भी बता ले गई तो शी विल गेट अ सिल्क चॉकलेट एट हर होम फ्रॉम OSN Academy फ्रॉम डॉक्टर अग्रवाल. सो नेहा, थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू हैव गिवन मी वन आंसर. तो यहाँ पे नेहा का हम ये आंसर लिख देते हैं, कॉमेडीज. अब नेहा को यहाँ का आंसर भी बताना है. अगर ये बता ले गई तो देन शी विल बी गेटिंग अ चॉकलेट. नेहा मौर्य, आपने उसको डिलीट क्यों कर दिया? इट वॉज राइट आंसर, इट वॉज अ राइट आंसर. बताइए, फिर से लिख दीजिए उसमें आप कॉमेडीज. जल्दी बताइए तो हम आगे बढ़ें. नेहा जल्दी बताइए बेटा, कॉमेडीज है, दूसरा क्या है, या दूसरा कोई और बता दे. बबली भट्ट, his second period is known as the period of growth and mind. सर झारखंड TGT PGT इंग्लिश लिटरेचर सिलेबस PG कोर्स के लिए है क्या? हाँ मुकेश, एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे TGT लगा है, उसको TGT ज्वाइन कर सकते हैं. जहाँ PGT लगा है वहाँ PGT ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आपने नेट ज्वाइन कर लिया तो सब कुछ कवर हो जाएगा. प्रिंस मैथ्यू, आई एम फ्रॉम केरला. नेहा मौर्य, कॉमेडी विंसर. नहीं, कॉमेडी वर्ड सही है. सेकेंड नंबर और बता दीजिए बस. सेकेंड क्या उसने और लिखा? Prince Matthew, you are from Kerala. Okay, I still remember so many girls and boys from Kerala, they have qualified NET in the last results. Even 3 students from Kerala, they have qualified the JRF also in the last attempt from my classes under my guidance. And उस समय हमारे पास जो नया एप्लीकेशन है वो नहीं होता था. So this new application is very high tech. It has a great learning experience and it is very very different from the last application which was not that technically sound means. So चलिए, नेहा ने दूसरा नहीं बता पा रही हैं. तो जो दूसरा बेटा है टर्म क्या है, वो है, पहला है फाइन कॉमेडीज एंड सेकेंड इज हिस्ट्री प्लेज. यहाँ पे एक वर्ड और लगा सकते हैं, फाइन कॉमेडीज एंड history plays. So now this completes.
tragedy, history plays. Isgar plays came in the second period. Bubbly Bhatt, no, इसको डार्क प्लेस नहीं कहते हैं. बबली आपका आंसर गलत है. लेकिन नेहा मौर्य, आई एम हैप्पी दैट यू कुड आंसर एटलीस्ट one portion of it, and Neha, I would be happy if you connect to me and give your address, and we will be sending you a silk chocolate. That is my promise. और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं नेहा? My number is given on the screen and you can note it down, Neha, and it will be a beautiful experience with you. Fine. Now, his second period is known for fine comedies and history plays. And now, in this second period, Shakespeare was actually in the world grappling with human nature and the affairs of the kings, and the kingdoms, and the plays of this period. How many plays of this period are? एक, दो, तीन, चार तो हमें याद आ गए. तो ऐसे करिए 1, 2, 3, 4. अब जल्दी जल्दी बताइए बच्चों कि ये सेकेंड पीरियड में कौन कौन से नाम थे. नेहा मौर्य, प्रिंस मैथ्यू, बबली भट्ट, सुरभि सिंह. जितने बच्चे भी हमें देख पा रहे हैं, जिनको भी पता हो फटाफट बताएं मुझे कि इस पीरियड के प्लेस का नाम बताएं. 1, 2, 3, 4. हाँ, 4 नाम हैं मुझे जो याद आ रहे हैं. 4 नाम हैं. एंड ऑल दीज प्लेज यूज टू डील विद द इंग्लिश हिस्ट्री. दे यूज टू डील विद द कैरेक्टराइजेशन, ह्यूमर. दीज आर ऑल थिंग्स विच वर इंक्लूडेड इन दीज प्लेज. बताइए पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा. क्रोनोलॉजी छोड़िए, आप हमें ऐसे बता दीजिए. नहीं बता पा रहे. बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा. हेनरी 4, बबली भट्ट, गलत आंसर है. दिस इज द रॉन्ग आंसर. आई एम वेटिंग फॉर मेनी मोर स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी. दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन. द प्लेज ऑफ दिस पीरियड आर. See Neha, the number is given on the screen. The application was given on the screen, and you can connect me and send me your address. Richard 3 भी गलत आंसर है बेटा. Richard 3. Yes, रमा गंगवार. 12th नाइट. 12th नाइट से 12th नाइट बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, 12th नाइट. लेकिन हम शुरुआत करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस से. द मर्चेंट ऑफ वेनिस. देन मच अडू अबाउट नथिंग. मच about nothing, and as you like it, and this is Twelfth Night. Julius Caesar नहीं है. Much ado about nothing. Yes. Historical plays also. History plays. Characterization and humor are psychological here, and in this era, in this second period, thought, the language are perfectly balanced by Shakespeare. जो rhyme था ना, rhyme basically now gave place to the blank words, which I have already told you few minutes before. Fine. Now comes the third period.
थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड बताइए अगर आपको कुछ पता हो, या थर्ड पीरियड की क्या विशेषताएं हैं। और थर्ड पीरियड जो शुरू होता है वो बेसिकली 1600 से लेकर के, जो मुझे याद आ रहा है, 1600 टू 1608, मेरे ख्याल से यही है, आप चेक कर सकते हैं उसको। एंड दिस इज बेसिकली known as a period of darkness. This is a period known as a period of depression. But apart from the darkness and depression, it is the greatest creative period. Of his life. Greatest. इसको हटा दीजिए अगर, तो it is considered to be the greatest creative period in his lifetime. And at this point of time, several misfortunes overtook him. Several misfortunes overtook him. पहली बात, his father died in debt and poverty. His father died in debt and poverty. He lost his brother and his only son. He lost his brother and his only सन। देखिए कितना डार्कनेस, कितना डिप्रेशन था। एंड हिज पेट्रन, हु वॉज हिज पेट्रन? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वॉज हिज पेट्रन, एंड दिस पर्सन, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, वॉज imprisoned for some political intrigues. His patron, the Earl of Southampton, was imprisoned for political intrigue. Patron, Earl of Southampton was imprisoned for some political intrigues. Fine. Then you must have heard a black-eyed lady. A black-eyed lady, जिसको हम क्या कहते हैं? द डार्क लेडी। एंड पूरा नाम लिख सकते हैं इसका, द डार्क लेडी ऑफ द sonnets. She disillusioned him. She, ऐसा कहा जाता है, she disillusioned Shakespeare by her depravity and inconstancy. Depravity and inconstancy. धोखा. So Shakespeare was disillusioned by her depravity and inconstancy. And these all experiences in the third period gave Shakespeare dark visions, depressions of depravity, of ingratitude, as we find in King Lear, in Hamlet, and even in Timon of Athens. Fine. And he also gave his vision of evil in the play Othello.
in Macbeth, King Lear, Julius Caesar, Antony and Cleopatra, which is known for rising to the highest level of poetry. But these plays reveal a moral crisis. And they are made out of those destructive passions which has shaken the foundations of the moral order and being ruined upon the innocent and the guilty alike. So this is for what is known. Surabhi aapne likha hai Othello, Hamlet, King Lear, Macbeth, all is correct. So that is why this third period is considered to be the most creative period, the period of genius, in spite that some things of darkness and depression was also along with it. Fine. Now, the last period is known as the fourth period. Fourth period हो गया आपका 1608 से लेके 1612 के आसपास. And this period was a period when Shakespeare was at his heights. चरम सीमा पे था, टॉप पे था. Shakespeare was at its heights. And the play of this period are 1, 2, 3. कौन से पीरियड होंगे? 1 बताइए, 2 बताइए, 3 बताइए. ये तो आप बता भी सकते हैं तुरंत मेरे ख्याल से. King Lear, Hamlet, Antony Cleopatra. Yes, correct. W.H. Auden क्यों लिखा है सुरभि आपने? W.H. Auden गलत लिखा है कुछ आपने. ये 3 प्ले का नाम बताइए जो फोर्थ पीरियड के हैं. द लास्ट पीरियड ऑफ शेक्सपियर. जो बच्चे नए देख पा रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले. यस, इट इज द लास्ट प्ले. लेकिन 2 और नाम बताइए. चलिए मैं एक नाम लिख देता हूं, तीसरा. द टेम्पेस्ट. आरती कुमार ने लिखा विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट. तो विंटर्स टेल भी हम लिख देते हैं, द विंटर्स टेल. एक और बचा है, ये बता दीजिए बस पूरा हो जाए. The third is left. Tell me the third, students. अभी तक आंसर आया नहीं. टेम्पेस्ट, कोरोनियस, पेरिकल्स हैं, वो तो पूरी नहीं हुई थी ना. सिम्बलीन है, सिम्बलीन. और ये जो पीरियड है, बेसिकली दिस इज अ पीरियड ऑफ 2 थिंग्स. दिस इज अ पीरियड ऑफ पीस and this is a period of peace and this is a period of forgiveness. So ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि. And now we will talk about Shakespeare, something about Shakespeare also. That Shakespeare ने जो ड्रामा लिखा, he made drama the most powerful vehicle of expression, rather of literary expression, because he was actually
had a God gift of possessing the diverse gifts, and he is equally great in comedy, and he is equally great in tragedy. He is equally great in plot construction. He is equally great in characterization. So we can say that his drama is the chronicle of the age, and it can be considered as the epitome of mankind. One thing is very important, that why Shakespeare 500 साल पहले और आज 500 साल बाद भी इतना ताज़ा क्यों है? Means कि we can connect with Shakespeare. If we look at our society, we will find Portia, we will find Shakespeare, we will find Shylock, Bassanio, Antonio, Romeo, Juliet. Each and every character we will find in our family, in the society, in the nation. Why Shakespeare is not getting, जिसको कहते हैं ना पुराना हो गया? Because only of one thing. He was a master of understanding the human psychology. Without studying psychology, he was a genius in understanding the human mind, the human soul, the human brain. And he is basically a dramatist, a person, a genius who has produced the largest number of living characters created by any other dramatist. And that is why his dramas are actually a true image of life. Because he understands psychology. इसीलिए आज 500 साल बाद भी उसके सारे प्लेज हमको ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर्स हमारे सोसाइटी से ही तो हैं. Every third person we feel that he is Antonio, Bassanio, Portia or Shylock in the society. And his broad-mindedness, which combines with his creative genius, his superiority, his skill, make him one of the greatest dramatists of the world. So his broad-mindedness plus his creative genius is equal to Shakespeare. इसको ऐसे समझिए, his broad-mindedness plus his creative genius. His creative genius, इन दोनों को जोड़ दीजिए, is equal to William Shakespeare. And the reason is he was a master of understanding the human psychology of the human mind. That is why he could produce plays, 37 plays, which are of immense beauty and immense vigor and power. A versatile person indeed. Any questions, students? Any questions you would like to ask? Any questions, students? Now, आपको ताजुब होगा जान के स्टूडेंट्स कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसको कहा जाता है सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. इट इज़ नॉट ओनली हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इट इज़ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड. दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. और सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि कोई नहीं पढ़ाता. एंड द रीज़न इज दैट दिस इज़ द बैकबोन, द वर्टिब्रेटा. आपने इस पर अगर कमाल ढा लिया तो आप समझ लीजिए कि ये बिकम अ जीनियस.
because everything is connected with the social history of England. And that is why when I teach in my different verticals of English literature through my application OSN Academy, every examination, चाहे वो TGT हो चाहे वो PGT हो, has the history of English literature with immense pleasure, with immense background from the Anglo-Saxon period to the modern age. And then I start the syllabus, which gives you the full quench the thirst of literature complete, and then only you can command your answers in the examination, or you can write very well if you are going to appear in any subjective examination. Without that, डायरेक्ट आप पोएम, नॉवल, ड्रामा पढ़ेंगे तो उससे नहीं होगा. So, जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ पे प्यूरिटन इंग्लैंड, और प्यूरिटन इंग्लैंड का जो टाइम था स्टूडेंट्स क्या था पता है? 1603 से 1660, 1603 से लेके 1660 तक ये टाइम था इसका. अब हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको कहते हैं स्टूडेंट्स पॉलिटिकल. ये देखिए कोई नहीं पढ़ता है. अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. माय गॉड, आपको लगेगा ये. दीपक गुप्ता, यू आर सच अ जीनियस एंड नो वन कैन रिप्लेस यू सर. हार्ट्स ऑफ. थैंक यू दीपक, थैंक यू फॉर योर comments, and I appreciate your feeling for me and for the OSN platform, and because you have given such a good comment, I would just like, as a teacher, as a professor, I would like to know that are you an English scholar, or are you trying to qualify any particular examination in the field of English literature? See, as far as political history is concerned, सबसे पहले अगर आपने, हमारे स्टूडेंट्स तो पढ़ ही रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, वो तो जानते ही होंगे कि जब प्यूरिटन की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है जेम्स वन का. और जेम्स वन मीन्स कब आया था वो जैकोबियन एज? 1603 से 1625. All my students, they are well versed in this area through my classes. So just to make you understand students कि जेम्स वन, जैकोबियन एज 1603 to 1625. So what happened? यहाँ पे क्या हुआ था आप याद करिए. 1603 में किसकी डेथ हुई थी? क्वीन एलिजाबेथ की. तो जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है 1603 में, who became जेम्स वन? जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड. जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड became James I. He became James I, and yes, who is James I? The King of England. So ये जो जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड थे, ये आ गए थे जेम्स वन बन के किंग ऑफ इंग्लैंड के जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई 1603 में. एंड एज ही टुक द थ्रोन, मतलब जब वो गद्दी पे बैठे, विराजे, मीन्स की इंग्लिश में कहते हैं एसेशन. His accession brought two blessings to England. मतलब जब ये राजगद्दी पे बैठे हैं, means when he came to the throne, when he occupied the throne, there were two blessings which happened. Two blessings to England. पहला क्या था स्टूडेंट्स? पहला था मुझे याद आ रहा है, the union of the kingdoms of England. The union of the kingdom of England and the end of Elizabeth's war with Spain. पहला क्या है स्टूडेंट ब्लेसिंग? कि यूनियन हो गया. किनका? किंगडम्स ऑफ इंग्लैंड का यूनियन हो गया. एंड द एंड ऑफ एलिजाबेथ्स वॉर जो पहले चल रही थी स्पेन से. बट फेलियर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंग्लिश पीपल led him to many difficulties. Because he came from Scotland and he failed to understand कि यहाँ पे लोगों का नेचर कैसा है, इसका ना समझ पाने की वजह से it led him to many great difficulties when he occupied the throne. Fine. And when James became the king, as I have just told you, there were three religious parties in England. There were three religious parties. Spanish Armada 1588. Yes, correct. अंजुमा खुंदरगी
Hi Anjuma, I am preparing for NET JRF, sir. दीपक, चूंकि आपने ऐसा लिखा है और आप कह रहे हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ आप पढ़ना चाहते हैं, तो जल्द से जल्दी से स्क्रीन पे हम आपको एक वो दिखा देते हैं. अगर आप पहले हमारे साथ नहीं जुड़े थे तो कहीं आप मिस ना कर जाएं, तो एक येलो कलर का स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए. एंड जस्ट सी दिस इज स्पेशली फॉर यूजीसी नेट स्टूडेंट्स. दीपक, जल्दी से इसको देख लीजिए. आप OSN Academy का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो दिस इज अ न्यू बैच विच हैज स्टार्टेड 2 days बिफोर, एंड दिस इज अ डिफरेंट बैच ऑल टुगेदर विथ मेनी ग्रेट फीचर्स. पहली बात, इसमें 1 साल का पैनल हो गया है, पहले 6 महीने का था. You are getting 1 year with no extra fees, and the physical packet will reach your place by post. That is also without any cost. So just go through it and see the application also on the Play Store, Deepak, which is also on the screen. And now I continue it. So हम बात करें अगर उसकी क्या नाम है, स्पेनिश आर्मडा. यस, आपने सही लिखा है कि when James became the king, there were 3 religious parties in England. मैं यहां पे लिख देता हूं 3 religious parties. 3 there were 3 religious parties in England. पहला, the Church of England. The Church of England, and this Church of England actually included the great mass of the people. Then the Puritans. The Puritans, who wanted to make the church more Protestant than it was. And the last, Roman Catholics. Yes, James one, who wrote the authorized version of the Bible 1611. Yes, correct. So again I am coming back to the point that when James I became the king of England, वहाँ पे 3 religious parties हो गई थी. पहला, the Church of England, which included the great mass of the people. ये देखिए लिखा है, the Church of England. Then the Puritans, who wanted to make the church more Protestant than it was, and finally the Roman Catholics. So these the last 2 extremist group, ये थे ना जो ये वाले Puritans and the Roman Catholics, they are basically considered to be extremist groups. इनको extremist group कहा जाता है. They hoped for better treatment from James. इनको ऐसा लगता था कि ये जो जेम्स हैं ये और अच्छा ट्रीटमेंट करें than they had received from Elizabeth. Means कि the things which they had received from Elizabeth, they tried to get more out of James I. कि they thought that he will give them more better treatment than they had received from Queen Elizabeth. And the Puritans hoped for it. इन्होंने क्यों होप किया ऐसा? Because James had been brought up as a Presbyterian. इसको ये कैसे बड़ा हुआ था? He was brought up as a Presbyterian. So these things are actually, the level which you have to reach. जब आप इस चीज को लिख देंगे और बता देंगे और आपको नॉलेज होगा, देन यू अंडरस्टैंड कि आप कितनी तेज एक्सेल करेंगे. सो द प्यूरिटन्स ने ऐसा क्यों होप किया कि ये हमको ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट करें? बिकॉज मतलब जेम्स वॉज ब्रॉट अप एज अ प्रेस्बाइटेरियन. एंड द कैथोलिक्स क्यों होप कर रहे थे कि अच्छा ट्रीटमेंट करें? बिकॉज दे हैड सफर्ड एंड प्लॉटेड अंडर एलिजाबेथ फॉर हिज मदर मैरी स्टुअर्ट. So the Puritans presented him a petition. उनको एक petition दिया Puritans ने, asking for more rights, कि हमें भैया और rights चाहिए Puritans को. So they presented King James I a petition asking them that I want some more rights for the Puritan people. And the king, जो James I था, he was actually under the fear that the spread of Puritanism would lead to the growth of democratic temper and would clash with his theory of divine right.
क्योंकि इनकी थ्योरी थी ना जेम्स वन की, डिवाइन राइट, इफ आई एम अ किंग आई एम एवरीबडी। सो अगर हमने इनको बढ़ावा दे दिया और प्यूरिटनिज्म बढ़ गया, सो दैट विल बी क्लैशिंग विद द डेमोक्रेटिक टेम्पर एंड वुड क्लैश विद हिज थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। सो उसने क्या किया कि उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया। किसने? जेम्स वन ने। जेम्स वन कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस, वेयर ही कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस एट हैम्पटन कोर्ट। ही कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस एट हैम्पटन कोर्ट और डिक्लेयर कर दिया वहां पे that he would not allow a Scottish presbytery in England. He would not allow a Scottish presbytery in England, and that he would not give them the right to censure him and his council. उसने कहा no bishop, no king, and threatened to harry them out of the land if they did not conform. So this declaration by him decided the hostility between the Puritans and even the Stuart kings. So क्या हुआ? Some of them went to England, some of them went to Holland, and some of them later sailed in the Mayflower of America. तो ये थी इसकी सोशल बैकग्राउंड की हिस्ट्री। और जो चीज़ एक निकल के आई, एक अच्छी चीज निकल के आई हैम्पटन कोर्ट के कॉन्फ्रेंस से, वन गुड थिंग विच केम आउट फ्रॉम द हैम्पटन कोर्ट कॉन्फ्रेंस वाज दैट किंग जेम्स अपॉइंटेड अ कमिटी। उन्होंने एक कमिटी अपॉइंट किया टू मेक अ न्यू ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, एंड दिस ऑथराइज्ड वर्जन पब्लिश्ड इन 1611 बिकेम द स्टैंडर्ड बाइबल फॉर एवरीवन इन इंग्लैंड। जो अभी थोड़ी देर पहले देखिए किसने लिखा है, किसी ने लिखा था ना, ये जेम्स वन, देखिए बबली भट्ट ने लिखा है। यस, इसकी ये कहानी थी। तो आप सोचिए पीछे की कहानी हम समझते हैं 99% बच्चों को नहीं पता होगी। तो ऐसे होकर के ऐसे जब आया, ये कमेटी बनी और कमेटी में ये चीज़ हुई कि एक ट्रांसलेशन बाइबल बनना है, तब ये जाकर के स्टैंडर्ड बाइबल फॉर एवरीवन इन इंग्लैंड हुआ है। तो ये इसके पीछे की कहानी थी, विच आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइन। Any questions? Anjuma, sir, I am studying in the BA 5th semester in English. BA 5th semester हुआ means कि you are almost at the end of your BA course. So, Anjuma, here I would like to ask you कि आप किस करियर के किस एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रही हैं, तब हम बता सकते हैं कि आपको कब शुरू करना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और अपने करियर को सेलेक्ट करने के लिए। फाइन। नाउ अभी तक आपको ये पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री पता चल गई जेम्स वन की। अब हुआ क्या कि जेम्स वन ने एलिनेट कर दिया प्यूरिटन्स को। व्हेन जेम्स नाउ एलिनेटेड द प्यूरिटन्स, ऐसे लिख सकते हैं, व्हाइल जेम्स alienated the Puritans, he removed restrictions of Catholics. He removed restrictions of Catholics and allowed them to go about and यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, टू गो अबाउट देयर वर्क unmolested. Now I think it will be much clear. While James alienated the Puritans,
he removed the restrictions of Catholics and allowed them, मतलब Catholics को, to go about their work unmolested. So these measures which was taken by James I revealed that the number of Catholics was far, far greater than had been supposed. And in alarm, James changed his policy and ordered the Catholic priests to quit the country. कह दिया कि भाई छोड़ दीजिए. इससे क्या हुआ? जब ऑर्डर कर दिया, this infuriated the Catholics. Catholics को एंगर आ गया. तो when he ordered the Catholic priests to quit the country, which infuriated the Catholics, so what happened? They hatched the gunpowder plot. आपने नाम सुना होगा, gunpowder plot. बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है. कैसे आया? यहां पे गन पाउडर प्लॉट जो है हैच किया गया. एंड वाई? विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लोइंग अप द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. इसलिए ये हैच किया गया कि उनको ब्लो कर देना था, टू ब्लो द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लोइंग अप द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, टू ब्लो द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. This gunpowder plot for this, to blow the house of the lords, so that king, lords and commons all would perish. But you know what happened? The plot was revealed. Plot का पता चल गया. And there was a man जिसका नाम है Guy Fawkes. Guy, F-A-W-K-E-S. Guy Fawkes इसका नाम था. He was the man who was charged with blowing up. इसने इसको ब्लो करना था, इसने किया था. And so he was hanged. Apart from Guy Fawkes who was hanged, there were other conspirators also who were put to death. उनको भी मार दिया गया. So this was the gunpowder plot. Understood? Archana Devi. Good afternoon, Archana. Now, after this, what happened? सबसे जो खराब पार्ट था, जब बिटर पार्ट था जेम्स रेन का, जेम के राजगद्दी का जो सबसे कड़वा पार्ट था, द मोस्ट बिटर पार्ट ऑफ जेम्स रेन वाज हिज फाइट विद पार्लियामेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. बिटर पार्ट ऑफ जेम्स वन वाज क्या था? वाज हिज फाइट विद हिज पार्लियामेंट. वाज his fight with parliament. It was no longer a subservient body which could listen to his royal speeches. And in his first parliament, जो कि 1604 और 10 में हुआ था, the opposition of views appeared and the commons claimed the right of free debate, and the King James I asked these people not to meddle with the government, कि भाई गवर्नमेंट के साथ मत उलझो. और कहा उसने कि देखो, I am now an old king, I must not be taught my office. हमें ना सिखाओ. सो 1612 की बात हम बताएं आपको. उसका एक काउंसलर था जिसका नाम था सेसिल. इन 1612 हिज काउंसलर सेसिल डाइड, मर गया. देन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्सेंड, और खराब होता चला गया,
when the counselor of James I, Mr. Cecil, died. And there was a chief minister who was known as Carr, C-A-R-R. He was a chief minister for 4 years, after which he gave his confidence to the handsome Duke of Buckingham. And you must have heard the name Raleigh, Walter Raleigh. He was executed for having attacked the Spaniards during his expedition to Guyana, G-U-I-A-N-A, Guyana. And now what happened, that the king now wanted to marry his son. जो कि राजा था ना, वो किससे शादी करना चाहता था अपने बेटे की? He wanted to marry his son to the princess of Spain. And so he involved himself in continental affairs. And things were in a muddle when he died in 1625. जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 1603 to 1625. So he wanted to marry his son with the princess of Spain, and so he got involved in lot of continental affairs. And वो सब चीजें रास्ते में ही थी, मडल में ही थी, जब उसकी डेथ हो गई 1625 में. Fine, students. So the long conflict जो मैंने आपको बताया between the crown मतलब होता है राजा. So this long conflict between the crown and the parliament. This long conflict between crown and parliament, between crown and parliament began in the reign of James I, mainly due to his policies. And he was learned, he was wise, but एक क्वेश्चन कभी कभी बहुत बार एग्जाम्स में आता है, he was called, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, who was called the wisest fool in Christendom? The wisest fool in Christendom. ये देखिए, who was, क्वेश्चन कर दिया मैंने, अब ये बताइए. तो आंसर इसका होगा जेम्स वन. He was learned, he was wise, no doubt, but he was called the wisest fool in Christendom. So the answer is James I. And throughout the Stuarts struggle, Stuarts की जो struggle थी वो थी 1603 से लेके 1689 तक. This was the period of the struggle of Stuarts. Throughout the Stuarts struggle, that was a period of 1603 to 1689, there were 4 points at issue between the king and the parliament. There were 4 points at issue जो कि king और parliament के बीच में चलता था. Fine. Any questions, students? So 1603 to 1689, this was a period of the struggle of the Stuarts, where 4 points at issue was there between king and parliament. P is parliament, K is king. अर्जुना, लेकिन अंजुमा आपने बताया नहीं. अच्छा, आपने बता दिया है. यस, मैंने पढ़ा नहीं कि आपको नेट की एग्जाम की तैयारी करना है. सो आई वुड जस्ट से दैट BA third year, by the time you are finishing your BA third year, first of all, if you are a student who is aspiring for the top post universities MA English entrance, then go for that, because if you are aspiring for that top level, then you have to study the MA English entrance batch. But if you are not aspiring, you are aspiring कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे, then you should take the UGC net batch. Fine. So this is my guidance to you. And all these things are in the application of OSN Academy, which I have already told you, I think. So there are 4 points at issue between the king and the parliament.
सो पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज दैट बहुत सारा जो है ना, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल था. देयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, द लिबर्टीज ऑफ पार्लियामेंट एक्चुअली asserted against the theory of divine right. पार्लियामेंट क्या था? They were against the theory of divine right. भाई जरूरी भी है, पार्लियामेंट कभी नहीं चाहेगा कि किंग जो है अब भगवान मान ले अपने को. सेकेंड पॉइंट क्या था कि देयर वॉज द रिलीजियस स्ट्रगल बिटवीन द किंग्स. religious struggle between the king. There was a religious struggle between the kings who leaned towards Roman Catholicism, who leaned towards Roman Catholicism and the Puritans. Fine. I'm studying in Karnataka University, sir. Okay, fine. Then I think you will be getting admission in your MA there itself without any entrance. Then I think you should go for the UGC NET batch. So you should plan for the UGC NET batch as soon as possible if you want to be a first divisioner or if you want to be a gold medalist of your own university. So it is quite possible. Fine. So this is the first point where the parliament were against the theory of divine right. The second point is that the religious struggle between the kings who leaned towards the Roman Catholicism and the Puritans. वो हमेशा religious struggle चलती रहती थी. And as far as foreign policy is concerned, in foreign policy, the Puritans in parliament opposed the marriage. इसमें हम ऐसे कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, इन फॉरेन पॉलिसी, एफपी मतलब होता है फॉरेन पॉलिसी, द प्यूरिटन्स इन पार्लियामेंट, द प्यूरिटन्स इन पार्लियामेंट अपोज्ड मैरिज. तो ये एक फोर्थ पॉइंट हो गया आपका, अपोज्ड मैरिज. एंड इवन आई कैन टेल यू दैट दे अपोज्ड मैरिज अलायंसेस विद ईदर स्पेन, marriage alliances they were opposed either with France. And why they were opposing this thing? Because both Spain and France were Catholic countries. And the last point is, the fourth point, 3 हो गए. The fourth point is that there were certain practical examples of misgovernment, like monopolies, like benevolences, like impositions, like favoritism and other administrative malpractices. So ये कुछ practical examples थे of misgovernment. तो fourth point केवल लिख लीजिए आप, misgovernment. misgovernment में चीजें आ जाएंगी, फिर से आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, monopolies, benevolences, administrative malpractices, favoritism and impositions. So these were the points which has to be taken into consideration for understanding the entire political scenario. एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? अभी तक में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई आपको क्वेरी, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी career guidance, any examination students? So you may put your comment here. And yes, you may subscribe the channel, those who students who are new to this channel for the first time.
तो हमने जो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री बताई, पहला था जेम्स वन, उसके बारे में पूरा डिटेल एक टू एक चीज बता दी मैंने. सेकेंड इज चार्ल्स वन स्टूडेंट्स. सेकेंड इज चार्ल्स वन. चार्ल्स वन जो है वो दूसरा है. एंड यस, इज 1603 to 1649. This great struggle between the crown, between the parliament, was actually fought to a finish when? In the reign of Charles I. And the struggle basically started soon after his marriage with Henrietta Maria. His marriage with Henrietta Maria. And who is Henrietta Maria, students? Sister of Louis XIII. Sister of Louis XIII of France. Henrietta Maria. And जो प्यूरिटन्स थे, they objected to his marriage. जो प्यूरिटन्स थे, they actually objected to this marriage because ये जो न्यू क्वीन थी, she was Catholic. And her love of pleasure and her fondness for dancing, for play acting, it was all, giving offense to the Puritans. But she exerted a very great influence on the weak mind of her royal husband. And yes, her Charles I's first parliament, इसका जो first parliament था, that was in 1625. His first parliament, 1625, wanted to be consulted about foreign affairs, to discuss religious forms or reforms, and to criticize the king's ministers. And all these things, the religious reforms, the criticizing the king's ministers, was actually contrary to the Charles' intentions. And so the parliament was finally dissolved. The parliament was dissolved. Any questions, students? I think we will continue this session, Shakespeare's England, Puritan and other things in the fourth session afterwards. So I think you must have liked this session, and before ending it, just one thing, that those students who want to study, good, the mini examinations are in the process of coming in the near fewer months, and the UGC NET batch is the most important for the NET as well as the UPSC candidates for their verticals. Thank you so much, and don't forget to subscribe the channel OSN Academy and download the application. Thank you.